Dere Dere Maya. पछाडि बसौ पछाडि बसौ First time coming to Nepal. What do you say thank you? धन्यवाद. It's Oh, yeah. it's Hindi, yeah. So, धन्यवाद. Hindi, के छ नेपाल? Kecha. के छ नेपाल? The Pashupatinath temple. I would love to visit Pashupatinath temple and I'm going to visit it tomorrow. You want to go to Mount Kathmandu. Everest? Of course. Maybe one day it's a One dream. day maybe, One yeah. आज हमारे पास नेपाल के लेकिन इंटरेस्टिंग वीडियो है। आप सबको पता है कि इंडिया के काफी सारे एक्टर जो है वो नेपाल से ताल्लुक रखते हैं। आज हमारे पास एक साउथ इंडियन एक्टर बाला मुकंदा की एक वीडियो है जो कि नेपाली के अंदर बात करते हैं, नेपाली के अंदर नमस्ते कर रहे हैं और बाकी सारी चीजों के ऊपर बात करें कि किस तरीके से नेपाली लोग एक दूसरे से मिलते हैं। चलिए आपके साथ शेयर करते हैं और आपको बताते हैं कि भाई ये साउथ इंडियन का एक्टर नेपाल में क्या कर रहा है, नेपाल में किस तरीके से घूम रहा है और नेपाल के बारे में क्या चीजें शेयर कर रहा है। आज आपके साथ इस साउथ इंडियन मूवी के एक्टर की ये वीडियो शेयर करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि नेपाल कैसे आए। Dere Dere Maya. पछाडि बसौ पछाडि बसौ First time coming to Nepal. What do you say thank you? धन्यवाद. It's Oh, yeah. it's Hindi, yeah. So, धन्यवाद. Hindi, के छ नेपाल? Kecha. के छ नेपाल? The Pashupatinath temple. I would love to visit Pashupatinath temple and I'm going to visit it tomorrow. You want to go to Mount Kathmandu. Everest? Of course. Maybe one day it's a One dream. day maybe, One yeah. day it's a dream. Hello, sir. It's a pleasure meeting you. Hi, same here. Okay. अमिषा सर्ट चलिरहेको रहेछ कि त्यसपछि लन्च ब्रेक छ 10-15 मिनटपछि त्यसपछि गरिदिनु न। हामी सकिहाल्छ, बसिसक्नु भयो, सकि त हाल्छ 2 मिनेट. 5 minutes finish. Yeah. You're all ready. Yeah. 5 minutes silence, everybody silence. Okay. Ready? Okay. So first of all, we have Sai. Everybody ready? Yeah, we all are ready. Yeah, we all are ready. All ready? Yeah. Recording ready? Yeah. Ready? Check 1 2 3. Check 1 2 3. Ready? You're very cute. Okay. Okay, so first of all, a very warm welcome to Nepal. Thank you very much. So how's Nepal treating you? First of all, a big hello to all my Nepali fans and to all the lovely people of Nepal. And it's a pleasure to be here. I'm enjoying my stay here. And we are loving every moment here shooting my upcoming film, Tyson Naidu. And it's a great film. The story happens in Nepal. So all you people from Nepal should show more love to this film. Obviously, they And will. I'm sure you people have shown me so much love for my previous films also. And I hope it keeps increasing and get more love from all of you. Okay. Love you all. Okay, so is this your first visit to Nepal? Yes, this is my first time coming to Nepal. I've always been wanting to come to Nepal, but thank you for making this happen very soon. Okay, so will we be seeing any actions in this movie? Obviously, we will. But Of course. It's a proper action film, and I'm sure you're gonna love it. okay, so have you watched a Nepali film? I mean, I did a little bit. I've watched a lot of trailers. So Vijay Lama sir is working on our film. Yeah. So I've seen Vijay Lama sir's trailers. And yes, I mean, I keep following with little content, but I didn't watch like movie. Okay, Maybe so you should give me some suggestions. I think, yeah, I think. Okay, so have you learned any Nepalese, language or any words? Have you learned any words, Nepalese words? Maybe you should teach some. What do you say thank you? Dhanyavad. It's Oh, yeah. it's Hindi, yeah. So, dhanyavad. Hindi and Nepali, they are quite similar. A big dhanyavad to all of you. Okay, you can And say, hello? you can say, Hello? you can say, धेरै धेरै माया नेपाललाई के छ is no के छ is how are you? KCH. के छ नेपाल? के छ नेपाल? Kecha. के छ नेपाल? केचा, You can also say नेपाललाई धेरै धेरै माया. Nepal, Dere Dere Maya. Okay, so where do you want to visit in Nepal? Where do you want to visit? Do you have any specific place? Do you have any specific place to visit in Nepal? Oh, I'm in the Pashupatinath temple. I would love to visit Pashupatinath temple and I'm going to visit it tomorrow. Okay. So I'm looking forward for it. Okay. So Kabir Singh Dohan sir, he came few months back and I have the privilege to meet him. I also interviewed him as well. Which one? Kabir Singh Dohan sir. Oh, yeah. And he worked in one of my yeah, films. and also our Ghazni villain. Okay, he also came over here, and yeah. Okay, so we know that how Bollywood, how Bollywood takes Nepal as, but how South, what South has their views on Nepal? Oh, of course, yeah. We have, I think
the difference has gone in today's time. It's all, we are all one. We are all human beings, first thing. So we are all human beings, and we should always encourage our neighbor countries, and we should, encourage the culture. We should try to learn it, and food. Yeah. And the momos are famous everywhere. Yes. And the trekking, Yeah. the Himalayas. Yeah. We all talk a lot about. You want to go to Mount Kathmandu. Everest? Of course. Maybe one day it's a One dream. day maybe, One yeah. day it's a dream. Okay. So thank you so much for your time. Thank you so much. What do you want to say to all our A big viewers? dhanyavad to all the viewers. Thank you for making a great stay for me in Nepal and show me more love. Wish you all the best. Thank to you. all of you. Thank you. One group photo. Can we take one Sure group thing. photo? पहिला उहाँको फोटो लियो अनि हामी पनि एउटा ग्रुप फोटो पछाडि बसेर है. Pasade base, right? हामी पनि आइरहेछ. Pasade base, right? First they will take your single picture for the news. एकचोटि पहिला सागर एउटा हान्दिहाल त मेरो. Can we होइन न भाइ फोटो खिच्दिहाल त. Okay, I know, shoot. Movie, okay? Okay. बस केटाहरू पछाडि उभियो त. Pasade base. Everyone say cheese. Bye. Pasade base. तल बस. Thank you. ल जाम सबै रेडी होइन त ल र के हो नेपाली फिल्म खेल्दा खेल्दै सिधै साउथमा कहिले जम्प हानियो त साउथमा हिजोदेखि सुटिङ भएको थियो चाहिँ अनि अलिकति पहिला पनि गरेँ हो पहिला चाहिँ बलिउड गरेको थियो IC 814 भन्ने यो चाहिँ नेटफ्लिक्समा छ अनि जस्तो राम्रै भएको थियो पनि देखिरहेको थिएँ ट्याक्सीमा कि कारको बाहिरपट्टिबाट के देखेँ हेरिरहेको थिएँ मैले हेर्नुभयो तपाईँले हेरिरहेको थिएँ त्यही तपाईँकै त्यति सिन मात्र हेर के डिफरेन्ट हुँदो रहेछ काम गर्दा एक्सपिरियन्स सुनाउ न नेपाली फिल्म अनि साउथ फिल्मको टिमसँगको होइन एज अ त्यो फिल्म इन्डस्ट्रीको काम चाहिँ एउटै नै हो तर उहाँहरूको चाहिँ अलिकति टिम ठुलो अलिकति प्रोफेसनल पनि हुनुहुन्छ प्रोफेसनल नेपाली पनि प्रोफेसनलै छ तर उहाँहरूको जुन 1 वर्ष भइसक्यो यो फिल्म बन्न थालेको यहाँ चाहिँ भर हो अनि त्यो हिसाबले चाहिँ टिम ठुलो भएको कारणले बजेट ठुलो भएको कारण चाहिँ थोरै चाहिँ स्लाइटली डिफ्रेन्ट चाहिँ हुन्छ नि कतिको फास्ट पाउनु भयो यहाँको साउथको काम गराइ नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीको तुलनामा काम त उस्तै हो तर अलिकति फास्टै छ यहाँको चाहिँ किन भन्दाखेरि उनीहरू पहिलादेखि नै सब म्यानेज गरेर आएको छ के खिच्ने होइन कुन सिन हो भनेर ठ्याक्क आज 3टा सिन खिच्ने हो भने ठ्याक्क 3टा सिन सिधै नै हाल्छ जस 6 बजे सुरु भएर 6 बजीसम्म खिच्ने भने चाहिँ 6 बजे प्याकअप भइ नै हाल्छ त्यो चाहिँ राम्रो छ यिनीहरूको भनौँ न हजुर र अझ विशेष गरी अब साउथको स्टार हुनुहुन्छ होइन साइज श्रीनिवास कस्तो लागिरहेछ उहाँसँग काम गर्दाखेरि होइन कुराकानी हुने मौका पाउनुभयो कि भएन हिजो चाहिँ अलिकति हामीसँग टाइम थियो आज चाहिँ त्यस्तो टाइम पाएन हिजो चाहिँ राम्रो कुरा भयो हाम्रो पोखरामा थियो अनि उसलाई जस यहाँको वेदरहरू मन पर्यो घुम्न आउँछु यहाँ आउँ भन्दै थियो होइन अनि मलाई चाहिँ उसको प्रेजेन्स मन पर्यो क्या त्यो टाइपको त्यो बाहुबली हेरिरहेको नि त यसो हेर्दाखेरि प्रवास आएको जस्तो जस रमाइलो हो जस रमाइलो छ मान्छे उहाँसँग चाहिँ स्क्रिन सेयर गर्नुभयो अब प्रवाससँग चाहिँ सेयर गर्न मन छ कि छैन होपफुली अब प्रवासको कतिको भाग्य छ नेपाली फिल्म हो त्यो पनि तर अब जसरी अब हामी त अलिक सानो मार्केटमै छौँ नि त अझ ग्लोबली जान सकिरहेको छैन इन्टरनेसनली सकिरहेको छैन होइन तर उहाँहरूसँग काम गरिरहँदाखेरि चाहिँ नेपाली फिल्म क्षेत्रलाई चाहिँ यसरी लानुपर्छ यसरी जानुपर्छ भन्ने एउटा आइडिया चाहिँ कलाकार भएर पनि आउँदो रहेछ कि रहेन रहेछ आइडिया त के छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो आर्ट फिल्महरू छ त्यो इन्टरनेसनली खाइ नै सकेको छ तर यो अलिकति बिग फिल्महरू जस्तो कि अलिकति रमकमहरू चाहिँ जान सकेको छैन त्यसको लागि चाहिँ अलिक गाह्रो नै छ तर इम्पोसिबल चाहिँ छैन हामीले प्लान बनाएर अलिकति कल्चर वेबाट जान सक्यो भने चाहिँ धेरै बेस्ट हुन्छ भनौँ न हामीले चाहिँ अब उनीहरूकै लेभलमा बाहुबली बनाउँछ भनेर त सकिँदैन बजेट हिसाबले हामी एकदमै ल्याक छौँ तर अब कल्चरली वेबाट जस्तै नेवार कम्युनिटी भयो होइन तामाङ गुरुङहरू जुन कम्युनिटी कल्चरबाट उठायो भने चाहिँ हामी यस वर्ल्डलाई चाहिँ खान सक्छौँ भनौँ न एउटा वर्ल्ड
स्टेजमा चाहिँ कम्पिटिसन गर्न सक्छौँ। हजुर र अहिले यहाँ अब छुल्टिम दिदी पनि हुनुहुन्छ नि त होइन हजुर। र विजय लामा दाई पनि हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूको पनि अब केही कुराहरू भन्न मिल्छ होइन के गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू त्यो पनि सुनौँ। उहाँहरूको चाहिँ जस अहिले सर्ट भइरहेछ छुल्टिमको होइन सी इज अ ग्रेट एक्टर होइन विजय दाई पनि एकदमै राम्रो कलाकार हुनुहुन्छ। अब जस गर्दै हुनुहुन्छ राम्रो गर्दै हुनुहुन्छ अब के भन्ने उहाँको सट्टामा मैले नमस्कार सबैजनालाई भने हजुर उहाँहरूको तर्फबाट हुनु। ओके बिस्तारै बिस्तारै अब भारतीयतिरै लाग्दै हुनुहुन्छ क्या चलचित्रतिर होइन अब सकेसम्म आएसम्म गर्ने सकेसम्म अलिकति बोर्ड वेमा जाउन भन्ने हिसाबले जस्तो कि अब यो तमिल छ तेलुगु छ होइन तेलुगुतिर पनि पुग्यो नि त होइन अस्ति भर्खर बलिउड गऱ्यो त्यो भएर अलिकति सिनारियो अलिकति वाइड भयो भने चाहिँ राम्रो भनौँ न नेपाली मलाई पनि राम्रो नेपाली आर्टिस्टहरूलाई पनि राम्रो। हजुर र अहिले अब हुन्छ नि के रुल छ त अब सोध्न मिल्छ कि मिल्दैन एकचोटि त्यो पनि सुनौँ। मिल्छ मेरो चाहिँ नेपालको एउटा पुलिस हो अनि सलाम साहब ए साहब होइन नि सलाम सर अनि ऊ पनि हाम्रो मेन लिड हुनुहुन्छ नि उहाँ पनि उताको इन्डियाको पुलिस हुनुहुन्छ। सो नेपाल र पुलिसको जेस कम्बाइन इन्भेस्टिगेसन चलिरहेछ कनेक्सन जस राम्रै छ भनौँ न अब चाँडै फिल्म आएपछि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके सो हामी पर्खाइमै छौँ हस् थ्याङ्क यू है बस थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू फोटो पनि प्रवासको खोइ त कुशल सर तपाईँले माइक निकाल्नु भयो ए म त किरण बोल न किरण दाइलाई छुल्टिङ दिदीलाई पनि बोलौँ न किरण दाइलाई बोलौँ न किरण दाइलाई त्यही त। तो आप लोगों ने वीडियो देखी होगी आप सबको पता है कि भाई साउथ इंडिया की बहुत सारी मूवीज हमने देखी है कि भाई वो बॉलीवुड की हो चाहे वो साउथ इंडियन की मूवी हो वो नेपाल में बनती है काठमांडू सिटी में और इसी चीज की वजह से साउथ इंडिया वाले हो चाहे वो बॉलीवुड वाले हो तो जितने भी इंडिया वाले हो वो कनेक्ट कर पाते हैं नेपाल को। अब नेपाल में आने के लिए इंडियन लोगों को कोई पासपोर्ट वीजे की जरूरत भी नहीं पड़ती तो ये ज्यादा कनेक्ट हो जाता है एक दूसरे ममालिकों को और कनेक्ट कर पाते हैं एक दूसरे को ताकि इनके बीच में कुछ इश्यूज ना बने इन दोनों ममालिकों के बीच में से कुछ ताल्लुकात खराब ना हो। अब दोनों ममालिक अच्छे तरीके से रहते हैं दोनों ममालिक एक दूसरे को अच्छे ताल्लुकात में रखते हैं। अगर हम बात करें इंडियन एक्टर्स की साउथ की नहीं बात करें हम बॉलीवुड की बात नहीं करें हम एक्टर्स की बात करें इंडियन की जिससे पहले हमने देखा है कि शाहरुख खान ने बात की है नवाजुद्दीन ने बात की है आशीष ने बात की है इसके अलावा जो है भारती ने बात की है। अब बहुत सारे एक्टर्स है एक्ट्रेसेस है जो कि नेपाल आ चुकी है घूम चुकी है और इन्होंने काफी अच्छा एंजॉय किया है और इसी एंजॉय के बेस पे ये लोग अपने एक्सपीरियंस को बताते हैं बात करते हैं। अब मैंने जैसे आपको बताया कि एक मूवी जो है वो पूरी की पूरी नेपाल में बनी है साउथ इंडियन मूवी और 2022 के अंदर वो बनी है। इसके अलावा एक 11 फिल्म थी जो अभी तक उसका मुझे नाम याद है एक ही बार मैंने देखी है 2020 यानी कोविड के लॉकडाउन में वो मूवी रिलीज हुई थी और उससे पहले शूट हुई थी बॉलीवुड की एक मूवी थी जो कि काठमांडू में शूट हुई थी नेपाल के कई सारे और हिस्सों में शूट हुई। तो इस तरीके से कई सारी मूवीज हमें देखने को मिलती है हम उसको पसंद करते हैं और अच्छे हमें लगती है।